Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी ए विषय रे पढ़िबा ऑलरेडी तमे प्लस टू रे या विषय रे पढ़ीच देखो दुई जन साइंटिस्ट रदरफोर्ड एंड सोडी दे एक्चुअली स्टडीड दिस फेनोमेनन व्हिच इज कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिविटी आउ तापरे केतेटा लॉज फॉर्मुलेशन करले जाको कहा गला लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी बा लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके सो फर्स्ट है रेडियो एक्टिविटी हूँ गोटे स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन बा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्वतःस्फूर्त एथिरे आमे देखा पाऊ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आउ आमे एठी प्रेडिक्ट करि परिबा नाही जे केते बेले गोटे पार्टिकुलर एटम डिसइंटीग्रेट करिवो गोटे रेडियो एक्टिव सैंपल रो सेकंड पॉइंट रे कहूची एटम्स ऑफ एवरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर कांस्टेंटली disintegrating or decaying into the new atom okay so एठी एमिशन हे पारे अल्फा किंबा बीटा रेज रो सो जो न्यू एटम टा बाहला ताको हमें डॉटर एटम बोली कहिबा व्हिच में एमिट गामा रेज if left in the excited state by emitting alpha or beta rays तापरे थर्ड पॉइंट रे कहूची द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक दैट ऑफ योर टेम्परेचर प्रेशर और केमिकल कॉम्बिनेशन एटसेट्रा कहा ऊपर डिपेंड करछि इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ओके तापर 4 नंबर रे एबे हमें याकू इक्वेशन रे जदी फ्रेम करबा जदी गोटे अल्फा पार्टिकल रो एमिशन होउछि ताले जो नुवा एटम टा बाहरिबो इट विल हैव मास नंबर लेस बाय 4 यूनिट्स सिमिलरली एटॉमिक नंबर लेस बाय 2 यूनिट्स ऑफ दैट ऑफ योर पेरेंट एटम ताले इक्वेशन रे देखो एटा पेरेंट एटम थिला विथ मास नंबर ए एटॉमिक नंबर जेड ताले डॉटर एटम रे देखो मास नंबर कमी जाइछि 4 आउ एटॉमिक नंबर 2 कमी जाइछि so that we are getting a alpha particle which is a doubly charged helium nucleus right तापर 5 नंबर रे एबे हमें देखिबा बीटा पार्टिकल रो एमिशन हेले कोन हबो एथिरे जो नुवा एटम बाहरिबो it will have atomic number which is more than 1 unit and mass number ta will remain same as that of your parent atom then this is again our parent atom and here this is the daughter atom देखो mass number same अच्छी but atomic number गोटे बढ़ी जाइए so that we are getting a beta particle which is nothing but a moving electron okay तापरे 6 नंबर रे the rate of disintegration এটা হচ্ছে সবুঠু ইম্পর্টেন্ট ল the rate of disintegration that is the number of atoms disintegrating বা decaying per second of a radioactive sample at any instant of time will be directly proportional to the number of atoms which are present at that instant माने जदि सपोज आमे dn कहूछु the small number of atoms which are disintegrating in a small time dt then n जदि हला number of atoms which are present at that instant of time which is suppose t right then dn by dt as per this sixth law should be proportional to n suppose एठी हमें गोटे proportionality constant आनिला which is lambda okay along with that we have put a negative sign here which is indicating that there is decrease in n with time okay time अनुसार n रो decrease होउची ओके जेते जेते टाइम बढ़ुची n कमी कमी जाउची तेणु करी नेगेटिव सिंबल आ ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लैम्बडा याकू हमें कहबा डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ओके सो एबे ए इक्वेशन को हमें सॉल्व करबा को चेष्टा करबा ओके देखो dn by n equal to minus lambda dt एबे इंटीग्रेट करबा देन वी ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सपोज गुटे आसिला एठी k ओके सो एबे ग्राफ को आम आसवा ओके के हूँ जमी कहली द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देखो
initially at time t equal to 0 number of atoms suppose ame कहला n0. Okay, now at time t number of atoms ହେଇଗଲା capital N. Okay, ताले एठी एई सब वैल्यू जदि आमे पुट करिबा प्रथमे at time t equal to 0 ताले k रो वैल्यू आमे पाइला which is log base e of n0. এই value को एबे आमे मूल इक्वेशन रे पुट करिबा and we again try to solve it further. So final equation हमर आसिला this one, n equal to n0 e to the power minus lambda t. Okay, so this equation is actually giving us the number of radioactive atoms which are left after time small t. Okay, एथरू जणा पडुचे ई इक्वेशन रु जे देखो e to the power minus रे अछि by exponential of minus अछि. So the radioactive decay is exponentially एटा decay करूची. Okay, so एबे यार जदि हमें ग्राफ पुट करिबा ताले देखो एठी n0 जोटा कि स्टार्टिंग बाय इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 थिला आउ एठी एक्सपोनेंशियली यारो decay हमें देखा को पाउछु and it will meet the x axis where we have taken the time at infinity. Okay, infinity रे एटा मीट करिवो. Okay, so same jinso another graph which I have taken from another book and here pasted. So एठी same jinso this is a very small segment जोटा कि हमें नौथला केते dn. Okay, which is now in the time dt. Okay, so a small segment को यूज करके हमें total atom रो जो disintegration होची ताको हमें पाई परिबा by this graph and this is our decay curve. Okay, अच्छा now this actually law जोटा कि हमें कहला radioactive decay law. Okay, so एथिरु जणा पडुची from the above law that the disintegration is very fast, rapid. Okay, it is rapid in nature in the beginning. Okay, starting रे बहुत ही जोर से बहुत fast decay हैला and then it will be slowed down. Okay, so as you can see in the figure एठी देखो starting रे बहुत शीघ्र एठी डाउनफॉल देखौची किंतु धीरे धीरे in the course of time it will be slowed down. Okay, अच्छा ताले मने करा जाओ capital M0 be the initial mass of the radioactive sample and capital M be the mass after time small t. ताले यारो भी सेही भला इक्वेशन आसीबो m equal to m0 e to the power minus lambda t. हला, so Rutherford and Soddy actually studied quantitatively the rate decay of some of the elements like thorium. Okay, and the rate recovery of the thorium activity. Okay, so the curve for the thorium was exponential in nature and the activity कोन एटा को हमें देखिबा या विषय रे activity could be expressed as a function of time by equation. Okay, अच्छा ताले ए जो activity याकू हमें equation रे फ्रेम कला a for activity as a function of time should be same format रे a0 e to the power minus lambda t. Okay, a0 हेगला initial activity of thorium and at हेगला activity suppose after time small t और lambda तो हमें जानिला एटा होची decay constant. ताले the recovery curve for the thorium is given by the equation a equal to a0 recovery जेबळे हमर थोरियम रो होची तार उल्टा हे जिवो. सो a0 1 minus of exponential of minus lambda t. ओके, सो एबे ए दुईटा जाको कर्व थोरियम रो हमें यदि पुट करिबा. ओके, सो देखो this is the curve which is showing us the decay and this curve is showing us the recovery. Okay, so similarly the decay and recovery for ux and u actually एठी थोरियम x आउ थोरियम निया जाइछि माने दुईटा अलगा अलगा एठी हमें कहि परिबा यारो आइसोटोप अछि. ओके, सो ux हला गोटे आइसोटोप यूरेनियम रो u हला आ गोटे आइसोटोप मने करा जाओ. ओके, ताले यारो भी सेम ही प्लॉट आछि देखो. ओके, दिस इज द प्लॉट recovery uranium रो आटा हला ux which is the decay. Okay, where we have plotted the activity against the time, right? Acha tale from these curves we can see these two are very similar.
in case of either thorium or uranium, except that the time scale is different. Time scale टा अलगा हबो, कर्व रो नेचर टा सेम रहिबो. ओके, आ हाफ लाइफ पुणी कोन एटा नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा. हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम x is more than the half life of thorium x. ओके, अच्छा ताले एबे आकु पढिबा जो डीके कांस्टेंट आमे बाहर कला रेडियो एक्टिव डीके लॉ जोटा कि dn by dt equal to minus lambda n ताकू सॉल्व करले lambda रो वैल्यू आमे एतिकी पाई परिबा. ओके, सो here the decay constant of a radioactive substance याको एबे हमें define करि परिबा from this law. It is defined as the ratio of the instantaneous rate of disintegration to the number of atoms which are present at that time. Okay, so आमर relation थिला n equal to n0 e to the power minus lambda t. मने करा जाऊ आमे एठी t जगारे equal to 1 by lambda माने reciprocal of lambda आमे पुट कला ताले n equal to एबे जदि हमें calculate करिबा it will be equal to n0 by e. Okay, so this is giving us an important relation. Hence from this equation the radioactive decay constant यार गोटे alternate definition पाइला of a radioactive substance may also be defined as the reciprocal of the time during which the number of atoms of the radioactive substance decreases to 1 by e of their number which are present initially. Starting रे जहाँ थिला that is n0 ताकू आमे एबे जदि देखिबा आफ्टर केते टाइम n0 by e हिजबो. ओके, सो सेथिरु आमे मध्य ए डीके कांस्टेंट रो गोटे अल्टरनेटिव डेफिनेशन पाई परिबा. ओके, एबे आसीबा जो एक्टिविटी कोथला कोन एक्चुअली एक्टिविटी जे कोनसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रो आमे जदि डिफाइन करिबा इट इज द रेट एट व्हिच the nuclei of the atoms are disintegrating in the sample. So जदि गोटे radioactive sample नेला which is containing suppose n number of atoms at any time small t, then its activity at time t is given by this relation a equal to minus dn by dt. it again minus symbol एथिपाई लागुची because activity is decreasing with increase of time. Okay, तेणु करी minus symbol. Okay, now as per the law of radioactivity dn by dt तो आमे जानिछु minus lambda n. So activity रो value केते आसिला minus lambda n. And now n रो value जदि एबे आमे put करिबा then we are getting lambda n0 e to the power minus lambda t, and let us say lambda n0 equal to a0, then we are getting a relation like this. Okay, which is quite similar to the relation of the number of atoms which are decaying. So it is a0 hela activity of the sample which is at initial time t equal to 0, right? Now following are the units of activity. It is very important. गोटे हला Curie, Marie Curie को ना रे यूनिट आछि शॉर्ट फॉर्म रे याकू CI लिखा जाए which is equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second. Okay, अच्छा आ गोटे हला सिमिलरली मिली क्यूरी माने मिली रो एकक जदि कहबो 10 to the power minus 3, then micro curie माने 10 to the power minus 6 of curie. Okay, so it is mci mu ci. तापरे another unit होची Rutherford. 1 Rutherford equal to 10 to the power 6 disintegration per second. Similarly एथिरु मिली Rutherford और micro Rutherford मध्ये आसीबो that is 10 to the power minus 3 बा 10 to the power minus 6 respectively multiply करिबो. ओके, अच्छा रिलेशनशिप कोन क्यूरी आउ रदरफोर्ड भितरे रिलेशनशिप हला देखो 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second. So एठी 10 to the power 10 रो हमें 10 to the power 6 को जदि काटि देला ताले we are getting 1 curie equal to 3.7 into 10 to the power 4 Rutherford. So which is the required relation between the Curie and Rutherford unit of activity. Okay, Thank you.